Good morning, sir. Good morning, Beta. Motion in a straight line. So equations of uniformly accelerated motion. If anyone is having any doubt in this topic, these four equations which I obtained in the previous period, then please discuss. First equation is V equal to U plus A. Second equation is S equal to UP plus half AT square. Third equation is V square equal to U square plus 2AS. And the one more equation was displacement in special second. This equation was S equal to U plus 1 upon 2A 2T minus 1. If anyone is having any problem in these four, please say. Anyone? So please explain the fourth one. Fourth one? Okay. Yes. This equation. This equation is proof of S equal to U plus 1 upon 2A 2T minus 1. The proof of this we are finding again. For this, here I am giving the some text. Let us consider a point object is moving with constant acceleration A. If it travel S2 distance in t second and S1 distance in t minus 1 second, then
using second equation of motion for number 1 t minus 1 second. So S2, sorry, S1 equal to U t minus 1 1 upon 2 A t minus 1 होल स्क्वायर. अगर आप चाहें तो ना इसको यहीं पे एक्सपेंड कर लें, U t minus U plus 1 upon 2A, this is t square plus 1 minus 2t. ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा, u t माइनस u प्लस 1 अपॉन 2 a t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 a माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा a t. दिस इज S1. मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1. दिस यू कैलकुलेटेड फॉर द टाइम t minus 1 second. When you say for time t second, for time t second, तो t सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट वाज s2. यू कैन सी, तो s2 equal to ut plus 1 upon 2a t स्क्वायर. चेक इट, क्योंकि s2 का टाइम जो था मेरे बच्चों वो t था, तो इसलिए वो इक्वेशन ऐसी आ गई. इसे कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2. नाउ distance covered in tth second. So s equal to s2 minus s1. s2 का वैल्यू बेटा बात समझ में आ रही है? Yes, sir. S1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहां से. दिस इज ut माइनस u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए minus 80. Now you can open the bracket. Got it? ut प्लस का ut माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर माइनस का रिमेनिंग टर्म्स को लिख लीजिए. u ये रहा प्लस ए टी माइनस 1 अपॉन 2 u प्लस ए कॉमन लीजिएगा t माइनस 1 अपॉन 2. आप चाहें तो ये इक्वेशन ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं. और अगर इसमें 2 एलसीएम ले लेंगे तो s इक्वल टू u प्लस a 2 एलसीएम ले लीजिए. सो दिस इज 2t माइनस 1. इसकी वजह से जो इक्वेशन बनेगी s इक्वल टू u प्लस a अपॉन 2 2t माइनस 1. गॉट इट? एनी डाउट? एनी डाउट? No, No, sir. sir. अच्छा ये बताइए, दिस टाइम यू पीपल आर हैविंग द एनसीईआरटी और नॉट? No, sir. Okay. So today I will be sending you the PDF of NCERT. Otherwise मैं आपको कहेंगे तो इसके फोटो भेज दूंगा मैं आपको. ठीक है? Sir, I am. Excuse me, sir. Sir, I am having ABC physics book. हाँ तो एबीसी में से देख लीजिए. मैं कुछ क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ, बस सेलेक्टेड क्वेश्चंस. उसमें देखिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होगी बेटा. Sir, एक second, sir. Please, rest of the people they are having the NCERT or not? Monica, प्रियल, प्रियांश, रविक, ऋषभ, स्वास्तिक, शिवम, अंजलि, अंशिका, अविका.
नो सर। This time having the NCERT or not? सर आप PDF सेंड कर दीजिए। No, sir. PDF सेंड कर दूं, ठीक है। तो दिस टाइम आई एम गिविंग द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम माय साइड। हाँ, ठीक है। ये सब कुछ समझ में आ गया, ये चेक कर लो पहले। ठीक है। यस सर। प्रिय, saying something. Question. An object moving in a straight line has velocity 5 meter per second at t equal to 0 when some acceleration is given to it. Acceleration is given to it. Its velocity becomes 15 meter per second in time t equal to 10 seconds. Find out number one, acceleration, number two, distance covered in this time. Try to get it. Meanwhile, I check that how many are present. This time, Anant Agarwal, Anjali Patel, Anshika, Ayush, Divyansh, Kshitij, Monica, Priyal, Priyansh, Ravit, Rishabh, Shivam, Swastik, Vindeshi, and Yash Sharma. Okay. You check the equation, what is said in this. An object is moving with a speed of velocity of 5 meter per second at time t equal to 0. So the initial velocity is u equal to 5 meter per second. t1 जो दे रखा है आपको वो 0 है। कहते हैं टाइम t2 इक्वल टू 10 सेकेंड, तो t2 इक्वल टू 10 सेकेंड। मेरे बच्चों ये बन गई फाइनल वेलोसिटी। This is taken as v equal to how much? 15 meter per second. कहते हैं एक्सेलरेशन बताओ। This is the सर acceleration. एक्सेलरेशन स्क्वायर एंड डिस्टेंस 100 मीटर। This is v minus u upon t2 minus t1. Good. This is 15 minus 5 upon 10 minus 0. So this is 1 meter per second square. Now the distance covered to s equal to ut plus half at square. U is 5, t is 10, plus 1 upon 2, a is 1, t is 10 square, so 10 into 10. Is this clear to all? Yes, sir. This is 50 plus 50, this is 100 meter. Got it? Is this clear to all? Yes, sir. यस सर। Anyone having the doubt? May I proceed on the second?
May I proceed on the next question? Yes, sir. Okay, very good. Yes, sir. Next question says, an object moving with constant acceleration covers 100-meter distance in first 20 seconds, and then in next 10 seconds covers 75 meter. Find out number one, initial velocity, number two, acceleration, number three, velocity of object, after 40 seconds. कीजिए. An object moving with the constant acceleration covers 100-meter distance in first 20 seconds, then in next 10 seconds it covers 75 meter. An object cover 100 meter in first 20 seconds. मैंने मान लिया इनिशियल पॉइंट वो है, ओ से ए तक आया 100 मीटर का डिस्टेंस इन 20 सेकंड. मान लीजिए यहां पर वेलोसिटी ये थी, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड चला, ए से लेके बी तक पहुंचा, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो 75 मीटर थी. So do one thing, first you discuss from O to A for the motion O to A. O to A के लिए using S equal to ut plus 1 upon 2 at square. The value of the S is 100.
U is unknown. The value of the t is 20 plus 1 upon 2a. 20 into 20. I hope this is clear. This is 10. If you write down the equation, this is 100 equal to 20u plus 200a. Do one thing, divided by 20. So 5 equal to u plus 10. Am I clear in my words? Yes, sir. Am I Yes, clear? sir. Okay, good. Now don't go for A to B. Go from O to B. Now, for the motion, O to B. If you go from A to B, what will happen here? The velocity is not known. तो आपने एक स्टेप बढ़ाना पड़ जाएगा कि पहले आप 10 मीटर के बाद में 100 मीटर के बाद में वेलोसिटी कैलकुलेट करो. So there will be some additional steps. So better you go from O to B. O to B, the complete distance is 175. I am again using it to 175. Now the time from here to here is 30 seconds plus 1 upon 2 a into 30 into 30. This is 15. This is 175 equal to 30u plus 450a. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. अगर मैं 30 से डिवाइड कर दूं मेरे बच्चों, दिस इज u प्लस हाउ मच it should be 5 15. बोलो भाई, कोई तो जवाब दो बाबा. Sir, 15. Taking too much time, mathematics students. This much, this should be 175 divided by 30. 58.33. 5.8. 30 है ये 30. 5 point. This is my dear equation number 2. Now you are having the equation number 1. Equation number 2. You can simplify these. So 5 equal to u plus how much? 10k. 5.8 equal to u plus how much? 15a. If you subtract these two, minus minus minus, minus 0.5 equal to minus 5. The value of a is 0.8 upon 5 meter per second square. So what you say, 0.8 divided by 5. This is 0.16 meter per second square. So what is the requirement? Acceleration. This is obtained. Now what they are saying to you, calculate initial velocity. Do one thing, the value of the a in equation number 1. Value of a in equation number 1. The equation number 1 says 5 equal to u plus 10. 5 equal to u plus 10 and the value of the a is 3.4. Very Initial velocity is 3.4. meter per second. Swastik. Good. Clear? Then after what they are saying, velocity of the object after the 40 seconds. Then we apply third part, v equal to u plus 8. U is 3.4 plus 0.16 and the value of the t is how much? 40 seconds. Got it? So multiplied by 40, this is equal to 6.4
plus 3.4. This is how much? This is 9.8 meter per second. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Anyone is having the doubt in this? देखो टेक्निक क्या लगाया, हम अगर a पर कैलकुलेट करते वेलोसिटी तो हमें v इक्वल टू u प्लस a टी लगाना, क्योंकि वेलोसिटी चाहिए a से b जाने के लिए, है ना? तो यहां से कुछ स्टेप्स का नंबर इसकी टर्म्स में बनता है। तो whenever you find this type of the situation, then you go for this. First O to A and then A to B. Got it? Clear? सर थर्ड पार्ट एक बार फिर से Yes. बता दीजिए। Third part or second? सर थर्ड। Third. You see what is said. The velocity of the object after the 40 second. You have calculated the value of the U and the A. This is A. This is U. So you are applying first equation of motion, v equal to u plus at. The value of the u is 3.4, a is 0.16 and the t is 40 seconds. Got it? Clear? यस सर। Okay. Next question. यस सर। This is page number 6, page number 5. अगर आप लोग एक बुक आता है SCV नाम से, SC वर्मा, क्लास में करना चाहेंगे सर, क्लास में बड़ी कंफर्टेबली हो जाएगा। कंपटीशन के लिए फंडामेंटल बुक है, ठीक? An object start from rest, accelerate for some time by alpha, and then retards uniformly for some other time Sir, what is it written in second line, first word? an object start from rest, accelerate for some time by alpha. This is the acceleration. Then retards uniformly, यानी कि slow down हो जाता है for some other time by beta. Got it? If t is total time of motion, then find out number one, maximum velocity attained in motion. Number two, total displacement. Try to get it. An object
सर जब रिटार्डेशन होता है तो एक्सेलरेशन माइनस में लेते हैं। जी सर। इसको करने का ना एक और तरीका बढ़िया से बताता हूं। आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लो। ओ सॉरी, दिस इज टाइम, this is time, this is velocity. अब स्टार्ट हुआ कहां से? रेस्ट से, जीरो से। कहते हैं किसी एक टाइम तक एक्सेलरेट हुआ, मान लीजिए द टाइम ऑफ एक्सेलरेशन इज t1, और जो एक्सेलरेट हुआ वो अल्फा से एक्सेलरेट हुआ, दिस इज अल्फा, और उस कंडीशन में जीरो से चलते चलते वेलोसिटी v आ गई। देन रिटार्ड हुआ यूनिफॉर्मली फॉर सम अदर टाइम t2, कितने से? बीटा से। If you see, this is the maximum velocity of the motion. ये वेलोसिटी का मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि जीरो से एक्सेलरेट होते हुए यहां तक पहुंच गया, फिर यहां से लेके यहां गए। अब दिस इज योर एक्सेलरेटेड मोशन एंड दिस इज योर रिटार्डेड मोशन। क्लियर? अगर मैं यूज करूं यूजिंग, अब दो तरह से लेके चल सकते हो, चाहो तो इक्वेशन ले लीजिए, चाहे तो ग्राफ ले लीजिए। ग्राफ मैंने इसलिए बना के दिखाया ताकि आसान हो जाए। अगर मैं यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करूं यूजिंग स्लोप, ग्राफ से निकालते हैं, अल्फा इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u, यानी कि 0 अपॉन t1। तो जनाब t1 की वैल्यू हो गई v अपॉन अल्फा। गॉट इट? अगर मैं बीटा की बात करूं तो अब यहां से यहां आ रही है, तो माइनस बीटा क्योंकि रिटार्डेशन है, इक्वल टू 0 माइनस v फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t2। तो t2 की वैल्यू हो गई v ओवर बीटा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? इज दिस ओके? Total time of journey is given t. Check it. Check it. What I am writing, please check it. First it accelerates, so alpha. Then it retards, means it is beta. Retards means minus. जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो this upon this, तो final minus initial. जब मैं यहां से यहां जाऊंगा फाइनल माइनस इनिशियल। गॉट इट? चेक करो, इज दिस ओके टू वर्क? प्रियांश, Yes, sir. शिवम, स्वास्तिक, यश, अंजलि। Yes, sir. इफ यू सी दिस इज t1, दिस इज t2, माय डियर, t इक्वल टू t1 प्लस t2। दे सेड यू दैट t इज द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, है ना? t is the total time of journey. So in the next page, t equal to v upon alpha plus v upon beta. Take v common, 1 upon alpha plus 1 upon beta. तो v equal to, sorry, t, पहले तो t रहने दो, LCM ले लीजिए यहाँ। Here you take LCM, alpha beta. This is beta plus alpha. तो v equal to alpha beta upon alpha plus beta into t. This is the velocity attained in the motion. This is maximum velocity. Attained in motion. Got it? Now you see what is required, total displacement. In the velocity time graph, if you calculate the area, then this represents total displacement.
So this is a triangle. So displacement equal to area. So displacement is S. 1 upon 2 base. Total base is T, you can see. And total height is V, you can see. But V equal to alpha beta upon alpha plus beta into T. So total displacement S equal to 1 upon 2 alpha beta upon alpha plus beta into T square. Got it? Any doubt? Any doubt? Check it. Go through once. क्षतिज गंगवार जी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अंजलि पटेल, अनंत अग्रवाल. Yes, sir. Yes, sir. ये बच्चे के लिए पूरा इक्वेशन कहीं कोई प्रॉब्लम दिखे. Anyone is having any problem? क्योंकि this is a little different type. Max. Sir, please explain again. Okay. देखो क्या कहा गया? What is said in the question? That an object start from rest, यानी कि u equal to 0 से accelerates uniformly for the some time by alpha. यानी कि ऑब्जेक्ट जीरो पर था, जीरो से इसका वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुआ और जीरो से बढ़ते बढ़ते इसका वेलोसिटी किसी एक टाइम t1 में कहां तक पहुंच गया? किसी एक वेलोसिटी पे, और उसके बाद में ये रिटार्ड होना शुरू हो गया बाय बीटा. तो ठीक है, आप रिटार्ड होते हैं फॉर सम अदर टाइम. मान लीजिए एक्सेलरेशन टाइम इज t1, रिटार्डेशन टाइम इज t2. ठीक है, ये कहते हैं if t is the total time of the journey, यानी कि t1 plus t2 that is equal to t. क्लियर? कहते हैं find out the maximum velocity in the motion. So you see that there are the two triangles. One triangle is here whose slope is alpha. Another triangle is here whose slope is beta. In the velocity time graph, if you calculate the slope, here I am mentioning here VT graph, slope equal to acceleration. स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन. ठीक, तो ये एक्सेलरेशन हो गया. गॉट इट? तो एक्सेलरेशन स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो v माइनस 0 अपॉन p ये आ गया. आप किसी स्लोप देख लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो माइनस का हो गया. आप ऐसे बोल दीजिए कहां से कहां तक का 0 माइनस b अपॉन t2, ये आ गया. t2 की वैल्यू ऑब्टेन कर दी. दोनों वैल्यू ऑब्टेन हुए जो t1 एंड t2, तो t1 प्लस t2 दैट इज इक्वल टू t. गॉट इट? क्लियर? दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, v कॉमन ले लिया, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. टेक अल्फा बीटा एलसीएम, देन यू गॉट द वेलोसिटी इक्वेशन. क्लियर? 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 Yes, sir. And then after when Yes, sir. displacement, so displacement in the velocity time graph is equal to the area. So this is a triangle, and this triangle is having a base of the t and the height of the v. The area of the triangle is 1 upon 2 base into height. The value of the v here you obtained this is substituted, so your answer is this. Is this clear? Is this clear? Yes, sir. Okay. Now because this is 9:45, your another class will be there, so you may join the another class. Okay. Thank you.